ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर ऋषि जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़। टुडेज माय टॉपिक इज ऑर्गेनिक लाइट emitting diodes, a boon for human life. Firstly, we see outline, introduction, history, organic materials, construction, working principle, types, application, recent development, advantage and disadvantage, challenges faced by OLED, and last one is objective and scope of the present investigation. Firstly, we see introduction. Lighting has played a most important role in human life since a piece of burning wood was invented. 5000 years ago, candles and oil lamps separated lighting from heating. Gas lighting 1772, electric lighting 1879, and fluorescent lamp 1938 were milestone in lighting technology. During the last few years, research based on energy saving technology is being given high priority all over the world. OLEDs led to a major revolution in the field of photonics. OLEDs works on the phenomena of electroluminescence, the emission of light from certain materials when electric field is applied to them is called electroluminescence. The light vision of the future. First generation is natural light, second generation is incandescent bulb, third generation is tube light and CFL, fourth generation is LED, and next one is OLED. Sir Thomas Alva Edison invented the light bulb in 1879. I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work. जब सर थॉमस अल्वा एडिसन लाइट बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो वह लगभग 10,000 बार असफल हुए थे। उसके बाद उन्होंने टंगस्टन को फिलामेंट के रूप में लेके उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। उसके बाद उन्होंने एक कोट कहा था कि मैं असफल व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे उन 10,000 रास्तों का पता चल चुका है जिनके द्वारा मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल सकती। Then we see what is an OLED. OLED is the abbreviation of organic light emitting diode. An OLED is a thin film optoelectronic device in which a single layer, double layer or multi-layer of organic materials is sandwiched between two electrodes, at least one of which is transparent or semi-transparent for the transmission of light. OLED is 100 to 500 nanometer thick or 200 times smaller than a human hair. अब मैं नैनोमीटर स्केल की बात करता हूँ। नैनोमीटर स्केल में हम देखते हैं कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। ब्लड सेल की जो साइज होती है वो 2 to 5 माइक्रोमीटर होती है, मीन्स 10⁻⁻⁶ में होती है। और मैं नैनोमीटर में देखता हूँ तो DNA जो होती है उसकी साइज़ होती है 2 नैनोमीटर, मीन्स OLED इसी रेंज में आता है। देन मैं ल्यूमिनेस एफिशिएंसी की बात करता हूँ। ऑयल लैम्प की 0.1 ल्यूमेन पर वाट, लाइट बल्ब की 16 ल्यूमेन पर वाट, फ्लूरेसेंट लैम्प की 70 ल्यूमेन पर वाट एंड LED की 300 ल्यूमेन पर वाट। हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ OLED. वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स वाज ऑब्जर्व्ड इन 1950. द इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स वाज ऑब्जर्व्ड फॉर the first time by Bernones and co-workers in 1953 at Nancy University, France. After 30 years, C.W. Tang and S.A. Wenslick introduced the first OLED from the thin organic layers in Corporate Research Laboratory, New York, USA in 1987. In 1990, electroluminescence in polymer was discovered by J.H. Bourgeois et al. Made polymer light emitting diode. टेबल फॉर्म में हम देखते हैं 1953 बर्नोनेस एट ऑल, 1963 पोप एट ऑल, 1976 कैलिनोव्स्की एट ऑल, 1983 पार्ट्रिज, 1987 टैंग एंड वेंसलिक. फर्स्टली थिन फिल्म लेयर ऑर्गेनिक लाइट emitting डायोड. 1990 बरोगेस एट ऑल मेड पॉलीमर लाइट emitting डायोड. 1998 बाल्दो एट ऑल मेड फॉस्फोरेसेंट LED जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती थी. 2012 अडाची एट ऑल TADF OLED. कुछ साइंटिस्ट हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर LED. स्मॉल मॉलिक्यूल एंड कंजुगेट पॉलीमर्स आर द टू मेजर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन OLED टेक्नोलॉजी. कार्बन कंपाउंड्स मेड पॉलीफिनिलिन विनिलिन. A brief history of lighting. 1879 Edison light bulb, 1990 sodium vapor lamp, 1970 first red LED, 1990 high brightness red, yellow and green LED used for monochrome signs, 1995 high brightness blue LED used for full color sign, 2005
White LED with high efficiency used for solid state lighting. Current lighting technology is over 120 years old. LEDs began as just indicator but are now poised to become the most efficient light source ever created. Construction of OLED. OLEDs are consisting of extremely thin layers sandwiched by two electrodes. OLEDs have three different structure by consisting of layer is single layer OLED, bilayer OLED and tri-layer OLED. Systematic diagram of the simple OLED: cathode, then organic layer, then anode, and last one is glass. Component of OLED: cathode may or may not be transparent. The cathode inject electron when a current flow through the device. Emissive layer: this layer transport electrons from the cathode. This is where light is made. Conductive layer: this layer transport hole from the anode. Anode transparent: the anode remove electron, add hole when a current flow through the device. Substrate: transparent plastic glass. The substrate supports the OLED. Single layer OLED. A single layer OLED consists of a thin organic layer sandwiched between two electrodes on top of the glass substrate. Indium tin oxide anode, emissive layer, aluminum cathode. Systematic diagram of single layer OLED. Bilayer OLED: magnesium silver is the form of cathode. AlCO3 emissive layer, diamine hole transport layer, indium tin oxide anode, and last one is glass substrate. Tri-layer OLED: magnesium silver is the form of cathode, electron transport layer, then emissive layer, then hole transport layer, then transparent anode, and last one is glass substrate. Working of OLED: holes are injected from the anode and recombined with electrons injected from cathode, creating an exciton. We know that the pair of electron and hole is called exciton, which emit light when it relaxes to the ground state. इस डायग्राम में हम देखते हैं एनोड और कैथोड. एनोड से होल निकलता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है. दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर और होल ट्रांसपोर्ट लेयर से एमिसिव लेयर पर आते हैं. यहाँ पर एक्साइटॉन फॉर्म करते हैं और जब एक्साइटॉन की एनर्जी बहुत हाई होती है तो वह एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आती है, तो अपनी एनर्जी को लाइट के फॉर्म पे वो रिलीज़ करती है. डायग्राम में देखते हैं इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड through the organic layers, giving electrons to the emissive layer and removing electrons from the conductive layer. Removing electrons from the conductive layer leaves holes that need to fill with the electrons in the emissive layer. The holes jump to the emissive layer and recombine with the electrons. As the electron drop into the hole, they release their extra energy in the form of light. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे की टाइप्स और एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे.